You're watching Reality Check, Decoding Yogi 2.0 on the day when the BJP's rising star and his ministers took oath in Lucknow, a mega event billed as a BJP show of strength. The Prime Minister and Chief Minister, the BJP's double engine, were the two main stars, but also in attendance a clutch of national leaders and the BJP's chief ministers from Karnataka to Goa to Assam, Madhya Pradesh and more, watched by a massive close to 50,000 strong crowd at a cricket stadium. Now this is the structure of Yogi 2.0, the power trio in a sense. The Chief Minister Yogi Adityanath and, like last time, two Deputy Chief Ministers. Keshav Maurya, who's the OBC leader, was brought back despite losing his seat. The other Deputy Chief Minister is Brajesh Pathak, who was earlier the Law Minister, a Brahmin leader, and who replaced Dinesh Sharma, who was the earlier Brahmin face of the top power trio. Overall, 52 ministers have taken oath today, which is up from 47 last time. The emphasis again is on reflecting the inclusion of OBCs and Dalits, that the BJP is not just an upper caste party. But only 5 women out of the 52, and only once again just one Muslim. At least 7 prominent ministers have been dropped. And a clutch of new faces, which again reflect the BJP's political priorities. Baby Rani Maurya, the Dalit leader, she was earlier Uttarakhand governor. She quit and fought these elections, and she's now been made a prominent minister. A.K. Sharma, who was a former official in the Modi PMO and a Yogi bugbear, Yogi had earlier resisted his entry, has managed to join the Yogi 2.0 cabinet. Asim Arun, former IPS officer, who again quit just before the elections. He's another member of the Dalit community in the cabinet. And controversially, Daya Shankar Singh, who was suspended in 2016 for making obscene comments against Mayawati, has been given a berth in Yogi 2.0. All right, let's go across now to panel. We have with us Chandrasekhar Azad, President of the Azad Samaj Party, the Bhim Army, is with us. Dr. Kafil Khan, leader and the Samajwadi Party and its MLC candidate, is with us. And let me start with Sudhin Bhadoria, who of course we've always had as BSP, joining us now as a political analyst, Sudhin Bhadoria. Thank you, Sudhin Bhadoria ji, for joining us. Tell us, Sudhin ji, as you watched... Yes, thank you very much for calling. As you watched today's function, as you watched today's event, did you get the sense that, you know, the BJP, because this was staged in a way, we'll just put those pictures up on the screen, to send out a message beyond Uttar Pradesh? This is what basically the BJP's narrative is, that they've swept UP and now it's just a matter of formality that 2024 is again going to be action replay. Well, 2024 is 2 years away, and the nation has seen a lot of ups and downs electorally. And of course, we have to concede that it has been an impressive victory for the BJP in Uttar Pradesh as well as nationally. Out of 5 states, they have won in 4 states. So we must concede as analysts as well as political observers that they have done remarkably well in the just gone by elections. However, I must say that if you see the last 50 years of political history, Mrs. Gandhi won with a very convincing victory in 1971, and yet by the next 2-3 years, she was down and out, and we saw a new government later. But I'm not saying that this will happen, but what I'm saying is it has happened in over the years that sometimes some people win with very convincing margins and things change. And so you don't, I can't rule out that there may be a change. But of course, as of now, as of today, if we are looking at it, it has been certainly a big victory for the BJP. Okay. And Kafil Khan, when you look at this Yogi 2.0, the way it has come up, what are your thoughts? Because their whole pitch is that, you know, they won on the back of Vikas, and this is just going to be 2.0 version of the same plank. Samajwadi Party was lawless. That's why people voted them out, and they've
rewarded the BJP's excellent work? Today I have just congratulated him, Honorable Chief Minister Yogi Adityanath, for his victory, and I hope that सबका साथ सबका विकास and सबका विश्वास जो that will be continued, and he will learn from his past mistake, what he has done in Yogi 1, or you can say BJP 1. But what are the mistakes? Because ये तो कहते हैं कि कोई mistake ही नहीं है, सब बहुत ही अच्छा था, इसलिए दोबारा जीत गए। I think in 5 years they have not done anything on a development plan. It was all about Shamshan, Kabristan, Ali, Bajrang Bali, and Jinnah, and other issues. Yeah, I agree with that. There are highways, and there are, welfare schemes like, the ration distribution, the Ujjwala scheme, the home distribution. Yeah, they really affected the general population. But the main thing was really hit is that the Ram Mandir court, and we have to accept that the BJP team, the way they worked and the internal conflict, they managed to control their restlessness, and they got the victory. Yes, I congratulated him, but I just hope the two part will be different than the first part, because first part I won't see anything in a real term, in the pace of development, education, health, employment, and COVID mismanagement. Everybody has seen body floating in the river. Okay, let me just go across to Dr. Priyanka Maurya. She is leader of the BJP. She actually came to prominence because she was part of the Congress's Ladki Hu Lad Sakti Hu campaign. She was the face of that, and then of course she ended up joining the BJP. If you just had a chance to hear Dr. Maurya, what Dr. Kafil Khan was saying, that you did manage, the BJP did manage a historic win, but it was not on the basis of performance. It was on the basis of Kabristan, Shamshan Ghat, all of that, and this new government will have to fix the failures of the past. Yeah, what I believe, doing justice with the people, और जिस तरीके से अभी बीजेपी सत्ता में आई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों के दिलों तक, लोगों की जरूरतों तक बीजेपी पहुंची है। हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, लोगों तक, लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको समझा है, और ये बिल्कुल गलत है अगर इसको सिर्फ इस तरीके से देखा जाए कि कब्रिस्तान एंड ऑल दैट ये सब ऐसे कुछ मुद्दे हैं। व्हाट आई बिलीव, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, एंड बीजेपी टॉक्स अबाउट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ। तो जिस तरीके से मेरा बस ये कहना था प्रियंका जी कि जब आप ये कह रही हैं कि बहुत सारा काम हुआ, ये सब हुआ, कि जब हम इलेक्शन में गए फील्ड में, आपने भी देखा होगा कि प्रॉब्लम्स तो काफी थे, बेरोजगारी थी, अभी भी है, महंगाई थी और अभी भी है, जो स्ट्रे कैटल जिसको कहते हैं आवारा पशु, वो मुद्दा था, अभी भी है। तो ये सारी चीजें तो हैं। जी बिल्कुल, देखिए चीजें हैं, बिल्कुल हैं, पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, बट पीपल कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पास्ट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हु इज रूलिंग राइट नाउ। अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं कि सरकार हर वो प्रयास कर रही है कि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उनको समझे और उसका निवारण करे। तो जैसे लोग अब कहते हैं जैसे आप कहते हैं कि जिस तरीके से ये आवारा पशुओं की प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए भी बहुत तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, लिए जा रहे हैं। ओके, देखते हैं उस पे मिल रहा है। ओके, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ ऑल्सो जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसे कहा जाता है, जो भीम आर्मी के नेता हैं और जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में कॉन्टेस्ट किया उन्होंने, ऑफ कोर्स हार गए, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। ये बताइए कि जब आप देख रहे हैं इस वक्त योगी सरकार 2.0 आ रही है और उनका स्वेर इन हो चुका है, क्या आपको लगता है कि अब इससे भाजपा की पकड़ बहुत तेज हो गई है और कहीं ना कहीं अब उनको चैलेंज करना यूपी में बहुत मुश्किल है?
देखिए, मुश्किल तो चीजें होती है, नामुमकिन नहीं होती। काशीराम साहब कहा करते, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। विपक्ष ने अच्छा नहीं किया इसलिए विपक्ष हारा है। विपक्ष के लोग जो हैं 6 महीने पहले चुनाव लड़ने आए थे, उसमें मैं भी हूँ। मेरा तो पहला चुनाव था। मुझे सच कहने में कोई बुराई नहीं। आप मान रहे हैं कि आप बहुत लेट उतरे मैदान में? नहीं, मेरा तो पहला चुनाव था। मुझे चुनाव इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। हम लोग तो 5 साल सड़क पे लड़े हैं। अब चुनाव लड़ने आए, बीजेपी ने अपनी तैयारी की हुई थी। और फिर एक इस बात को कहने में भी कोई परहेज नहीं कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग भी किया है। जिस तरह सरकारी मशीनरी को उन्होंने मिस यूज किया है। चुनाव आयोग से हम लोग चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। पता नहीं चुनाव आयोग था भी या नहीं था। नहीं, तो हम लोगों ने प्रयास किया है। एक सेकंड, लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि देखिए ये विक्ट्री जो है ये एक विकास की विक्ट्री है और इसीलिए हम दोबारा विकास के एजेंडे के साथ आए हैं कि हमने लोगों की जिंदगियां बदली हैं, राशन बांटा है, हाईवे बनाया है, ये सब किया है। मगर आप ये भी तो नहीं नकार सकते कि बीजेपी ने पहले से कम सीटें पाई। आपने 5 साल की सरकार चलाई तो आप वो आगे बढ़े हैं पीछे हटे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा था बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, और जिस तरह से जाति धर्म की पॉलिटिक्स बीजेपी ने की है। बीजेपी ने धर्म को इन्वॉल्व किया है। बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो फिर राम के सहारे क्या जरूरत पड़ती। बीजेपी ने जो किया है वो सब लोग पूरे प्रदेश में देखा। और एक ऐसा नहीं कि लेकिन अगर आप कह रहे हैं बड़ा वोट पड़ा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये सब किया है, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप जात के उस पर भी समीकरण देखें इस बार, तो दलितों ने, जिसको मतलब आप तो ऑफ कोर्स आप मानेंगे कि आप सब पार्टी के, सब समाज के लीडर हैं, लेकिन खासकर आपका फोकस उस समाज में रहता है। तो एससी कम्युनिटी ने, बीजेपी कह रही है कि उसको अच्छी तरह वोट किया है। आज हम देख भी रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य जो एक दलित समाज की महिला है, उनको प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री में लिया है और बाकी भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। आसिम अरुण भी हैं उसी कम्युनिटी के। तो क्या ये भी एक चैलेंज है कि बीजेपी इन जातियों में भी उसकी पकड़ बढ़ रही है? आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, लेकिन तब ये लोग क्यों वोट कर रहे हैं फिर बीजेपी को? 2 चीजें मैं साफ कर दूं। पहली ये कि इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ है तो लोगों को पता ही नहीं है किस जाति के कितने वोट है और किस गांव में किसने कितने वोट है, किसने किसे दिया है। परिवार के वोट तो आप बता नहीं सकते हैं किसको गए। ये सब ये फेयर ये जो है ना, ये मीडिया ट्रायल हो, ये सब चीजें, इन सब चीजों का मैं इन पे भरोसा नहीं करता। हम तो फील्ड में काम करते हैं। तो सच ये है, हम तो बहुत दिन से कहते कास्ट सेंसस होना चाहिए, सरकार करा लेती तो शायद ऐसा हो जाता। दूसरी बात, आपने बेबी रानी मौर्य जी के बारे में कहा, आसिम अरुण जी के बारे में कहा, तो मैं सम्मान करता हूँ उनका। बीजेपी ने उनको मौका दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा तो वो उनके लिए अपमानित होगा। लेकिन सच तो है ही कि पहले भी बीजेपी में शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप थी, बैकवर्ड की लीडरशिप थी, लेकिन जब उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, जब उनके अधिकार छीने जा रहे थे, जब हाथरस जैसे इश्यू हो रहे थे, सब लोग चुप थे। जो लोग पार्टी के गुलाम हैं वो लीडर नहीं हो सकते हैं। हाँ, इनसे इनके घर चल जाएंगे बेचारों के, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जो अन्याय, जो इनजस्टिस सहेगा सोशल जो है ना, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग, उस पर कभी बोल ही नहीं पाएंगे। बीजेपी ने एजुकेशन का बजट कम किया, स्कॉलरशिप खत्म की, बीजेपी ने आरक्षण व्यवस्था घोटाला किया, 49 शिक्षक भर्ती में, कौन सा बोला? लीडर तो सब थे उनके पास, बैकवर्ड के, शेड्यूल कास्ट के भी। राइट। तो मैं समझता हूँ ये लीडर्स नहीं है और कुछ लोगों ने हिडन मदद की है बीजेपी की। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये लीडर्स नहीं है और ये एक तरह से गुलाम बन के रह रहे हैं। एनीवे, वील जस्ट गेट अ रिएक्शन फ्रॉम द बीजेपी आफ्टर द ब्रेक। बट बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, चंद्रशेखर दादा। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कम राइट बैक। Right, welcome back. You're watching Reality Check. Sudhindra Bhadora ji, that what you said, that it's of course going to be difficult to dislodge the BJP with this kind of force they've come in. But overall, though, if you look at the BJP's performance, and as we just heard there, Dr. Priyanka Maurya saying that a lot of good work was done. You know, people were felt better about their lives, and that's the basis of the second government. Would you agree with that? That there were, positives that happened? Well, of course, the data is there to prove what happened and what claims are being made is correct or not. But the fact is, whatever is the perception, that becomes the reality. So the perception may have been what
she's saying, but the reality can be a different also. What is the reality? The reality is the factor of unemployment, the factor of poverty, hunger, farmers' issue, and rural distress. So many things are there. However, the opposition has also lacked something. I mean, one has to acknowledge that then there is a need for self-introspection, and there is a need for a narrative. And I think it is on this account there needs a deep thinking. But today is a day of victory for the BJP, and there is a swearing-in which has taken place. So congratulations to them, and they are that now they're in power. No, you're saying victory. You're saying victory but the fact is that nobody went for the swearing-in from the opposition. Mayawati didn't go. Kafil Khan, even Akhilesh didn't go. And in fact, Akhilesh tweeted saying कि आप बधाई हो जो हमने. It has happened in the past also. It has happened in the past also, but anyway, I mean, two wrongs don't make a right. But Akhilesh tweeted saying आपको बधाई हो, but आपने swearing-in किया हमारे बनाए हुए stadium में. That's true. That's true. The stadium was built under Honorable former Chief Minister only. And the thing is that he meant it that the government should take everyone along with them, whether they have voted for Yogi 2 or not. That should be the Chief Minister should do. It should not isolate a particular community. It should not isolate a particular caste. Actually, what the BJP do, they create usually most of the time a pseudo euphoria in a particular population and create a pseudo psychosis in a particular community. What we have seen in the past 5 years, I just hope, because it's just the beginning of Yogi 2, and I just hope, that's why I said he should learn from his mistake. Okay, Dr. Maurya, he should. Okay. Let me ask Dr. Maurya about that. I will just ask Priyanka. No, एक second. One at a time. Dr. Maurya, एक second. Stop this. Okay, 1 second, Dr. Khan. Dr. Maurya, ये जो सबका साथ पे जो चलता है विवाद की, आज भी देखा जाए तो 52 मिनिस्टर्स में से सिर्फ एक ही मुस्लिम मिनिस्टर को जगह दी गई है. हालांकि मुस्लिम्स 20% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं, वो 1% से कम भी नहीं है इस कैबिनेट के. तो यही क्या ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, जो पहले भी था वही चलता आ रहा है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलती आ रही हैं, हर पार्टीज में होती हैं. और अभी जैसे मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ. पिछले योगी सरकार में भी सिर्फ एक ही मुस्लिम मिनिस्टर था, इसमें भी एक ही है. मैं जरा सा ये रख दूं, जैसा कि उन्होंने ये कहा कि कास्टिज्म की राजनीति होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी से बड़ा कास्टिज्म कोई भी पार्टी करती है, क्योंकि जहां पे सिर्फ हिंदू नहीं, जहां पे सिर्फ यादव और मुसलमानों की बात की जाती है. लेकिन बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की सबका साथ कैसे, जब सिर्फ एक ही मुस्लिम मिलता है. नहीं, एक ही मुस्लिम मिनिस्टर कैसे उसको सबका साथ कह सकते हैं? देखिए, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको टिकट्स भी दिए गए और जगह जगह से लोग जीत करके भी आए हैं. तो जिस तरीके से अगर हम ये सिर्फ बोले कि हाँ ये बहुत रेशियो माइनर है, ये मेजर भी हो सकता है. बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी, थिंग्स डिपेंड ऑन किस तरीके से कौन कार्य कर रहा है. डॉक्टर मौर्य, एक्चुअली द बीजेपी गेव एग्जैक्टली 0 tickets to Muslims. This person is not even a MLA. He's been brought from outside, and out of 400 seats, not one ticket was given by the BJP to a Muslim. So, I mean, let's hope, we're out of time, but let's hope that there is a change, genuine Sabka Saath, Sabka Vikas in Yogi 2.0. But that's all the time we have. Thank you for joining and for watching. Good night.